ओके गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर सार ओडिया फैमिली। तो फर्स्ट मते कह कि मोर ऑडियो वीडियो सब क्लियरली आछि कि नहीं तापरे मु तमनु किछि इन्फॉर्मेशन शेयर करिवि। तो खाली मते फर्स्ट एति कि कमेंट बॉक्स रे समस्त को मते कहि दियो कि मोर ऑडियो वीडियो क्लियर आछि बोली। प्रणाम प्रणाम समस्त को। तो किछि नुवा इन्फॉर्मेशन तमनको पई कि तमनकर इंग्लिश क्लास को नै कि बहुत सारा क्वेरी थिला कि हमर इंग्लिश क्लास हो नै। तो ता पई किछि इन्फॉर्मेशन अछि जोटा कि सुजीत सर तरफ रु मु एठी तमनक आगे एक्सप्रेस करिवि। ठीक अच्छे। तो मते फास्ट खाली कह मोर ऑडियो वीडियो सब क्लियर अच्छी तो हाँ क्लियर 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 ओके ठीक अच्छे। तो मु फास्ट कौन कहूँ कि तुम मानकर ओडिया क्लास होउथुला हिंदी क्लास होउथुला तो बहुत सारा पिलांकर प्रोब्लेम होउथुला कि आमर इंग्लिश रो क्लास कहीं कारण इंग्लिश पई गोटे बहुत सारा प्रोब्लेम पिला फेस करिया को पड़थुला। इंग्लिश रो ग्रामेटिकल पोर्शन हो सेतिरे पिला मानकर बहुत कम स्कोर होउथुला। तो ताकू ओवरकम करिया पई सार ओडिया तुम मानक पई किछि गोटे नुवा स्पेशल लेके आछंती। तो जोटा कि तुम माने थंबनेल रु जानि परुथबो। तो थंबनेल रु आज मु तुमको किछि हमर नुवा फैकल्टी इंग्लिश रो प्रवीण सर को तुम मान सहित इंट्रोड्यूस करेबी। तो निहाती तुम मैंने देखिबो तांको क्लास को एंजॉय करिवो। तो ता पूर्व मु सार को विषय किछि इन्फॉर्मेशन दवा पई चाहूची। तो सार केमती कोन कोठी पढौचंती कोन पढौचंती आउ केते दिन हैला पढैलेनी ता ऊपर किछि इन्फॉर्मेशन मु दवा को चाहूची। तो इन्फॉर्मेशन कोन तो सार को ना होचंती सार को ना प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार पटनायक। आ तो सार एमए एमफिल पीएचडी सब गुडा करके रखी देछन किछि आ बाकी नाही सारंकर सब गुडा ऑलरेडी हो जाइछि। ता सहित 30 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंट्स तो 30 वर्ष प्लस हैला। तो एक्चुअली मु सत कथा कहया गले मोर भी मेंटर मोर भी टीचर सार आउ मु जन्म हवा पूर्व सार पढ़ेवा स्टार्ट कलेनी ताको गाइडेंस रे मु भी रहिछि मु भी एन्जॉय करछि ताको पाठ पढ़ा को। होप तुम माने भी एन्जॉय करिवो। तो तुम माने कोन कहउछ इंट्रोड्यूस होवा पे रेडी तो जदि सार को देखिया पई सार को सहित इंट्रोड्यूस करिया पई राजी अछ ताहाले गोटे कमेंट बॉक्स रे कि हां सर हम एक्साइटेड बोली लिखि दियो तापरे मु सार को इनवाइट करिवि। एति खाली इन्फॉर्मेशन मते गोटे कमेंट बॉक्स रे देई दियो कि सर हम एक्साइटेड अछु। निहाती सबो सार केमिति कोन इंग्लिश रे करिवे क्लास तो सार को मु कहिबी तुम मानक सहित डिस्कशन करिवे। ओके यस 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 समस्तंकर आंसर आसी जाउची। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे मु आ लेट करिविनी हमर जल्दी प्रवीण सर को मु कहिबी सर टिके आसंदो पिला मान सहित इंट्रोड्यूस हो टिके सर हम पिला को पिला वाले लाइव रे अछंती पाखा पाखी 500 प्लस पिला अछंती। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार। आज गोटे फर्स्ट चांस अच्छी एट मु सर ओडिया रे आपण मान सहित शेयर करी और इंग्लिश नॉलेज जेतिक अच्छी मु सबतक एटी शेयर करने प्रस्तुत होइक अच्छी। आ बहुत बढ़िया परिवार तमମାନଙ୍କର फ्यूचर रे इंग्लिश टा केमती दरकार पड़िबो केमती ताकू पढ़ा जीवो एवं केमती तमे स्कोर करिवो भलो से विषय मु तुमको टिप्स भी करबे एवं जेमती टीचिंग करिया कथा से समय पढ़बी। बट आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बट इन बिटवीन आई हैव टू कंप्लीट ए सेंटेंस इन ओडिया इफ यू लाइक इट। ओके सो इंग्लिश मीन्स इंग्लिश एटा हबा कथा किंतु जेहेतु आमे बिगिनिंग रु नौचे ताकू एंटरटेन हिसाब रे नबा एवं करबा कंप्लीट डिटेल्स मु तुमको ओडिया रे भी बुझाई देबी इंग्लिश रे भी कहबी ओडिया रे कहबी डाउट भी क्लियर करबी एग्जांपल्स दबा तापर हमें रेडी होबा इंग्लिश रो केमती क्लास गुडका इन फ्यूचर ताकू केमती ब्राइट करिया पाए। ओके सर हम पिलांकर बहुत डाउट अछि कि ग्रामर को नेकी बहुत सारा पिला प्रॉब्लम फेस करूछन। जस्ट यू लिसन वन थिंग गोटे ग्रामर होची इंग्लिश रो बेस जहा कहंती एवं आज मु गोटे पढ़ेवा पूर्व फर्स्ट तुमको इंट्रोडक्शन देके गोटे आरंभ करबी गोटी पद कथा कहबी verb is the soul of English and tense is the brain of English. Okay, verb is soul ଆଉ tense होची brain आम सोल आ ब्रेन दीटा छाड़देवा आम मनीष जीवन में किसी न था सेमती ए वर्ब आ गोटे हूँ टेन्स ए दीटा को नेले आम कौन कह कंप्लीट इंग्लिश आ ग्रामर ही इंग्लिश ठीक अच्छे किंतु से जो एंटायर ग्रामर टाकू जो गोटे डर अच्छी सेटा मोटे डर नुहे थरे से भितर आम एनग्रस्ट हो तो सारा जीवन पे यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन निजे निजे कर ताकू चाहिए गोटे जिनस आज मुझे फर्स्ट बेस स्टार्ट करेबी कहबी एवं डरबार किसी ना आम ए 100% रु स्कोर करवा अधिका निश्चित भाव में एवं सब डाउट क्लियर करी केते प्रकार क्वेश्चन पैटर्न केमती जाए ताकू केमती करा जाए सब सिस्टम मु करी आज गोटे पेशेंस सहित आपण मान टिके रहिबे तो घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा जहाँ पढ़ेगा आउ जदि किसी डाउट है भी से भितर मत रिमार्क करेंगे मुझे चेष्टा करी सेट करने एवं निश्चित भाव में यहाँ गोटे भल सुजोग भल भी हम एवं मुझे चेष्टा कर आशा कर इन
योर फ्यूचर विल बी ब्राइट मु ठीक भाबुची तेणु मु जेटा जेते पारे सेटा तमर क्लियर करिया पे चेष्टा करिवि ओके आ ठीक अछि वर्तमान सार तो एटी पाखरे अछंती कोन कोन कहिबे तापर मु क्लास स्टार्ट करिवि अच्छा तो एति कहबी सार आज स्टार्ट तो करूचंती क्लास तो निहाती सार को टिके कोऑपरेट करिवो क्लास को एन्जॉय करिवो मु जानिची मु सारंग पाखरु पढिची आ मो टाइम रे मु बहुत एन्जॉय करिची सारंग पाखरु निहाती सार बहुत बढ़िया पढेबे आपण निजे फास्ट गोटे क्लास देखंतु तापर निजे आप माने भी जानि परिबे सुजीत सर पढौतिले तो सुजीत सर इंग्लिश पढौतिले आगु मु भी जानिची तो सुजीत सर को भी भूली जीवो सुजीत सर गोटे अलगा टुए रे सी वर्तमान अलगा लाइन को गलेनी तो सुजीत सर टू बेटर भी मु कहि परिबी कारण मु जानिची कोन किंतु तमनक पई जेहेतु तमर गोटे आकांक्षा तो ता ऊपर मु कोनोसी कमेंट देबा को चाहुनी तो किंतु एति कहबी फास्ट गोटे दिटा क्लास सारंकर देखो आउ एनालिसिस निजे करो तापर निजे जानि परिबो ओके ठीक अछि समस्त को रिक्वेस्ट कि सारंको टिके कोऑपरेट करो आउ क्लास पूरा पूरी भल से लास्ट पर्यंत रुहो जहां भी सार 1 आवर नियंतु 2 आवर ने जहां भी नेबे तो तमाने पूरा पूरी एन्जॉय करो सर एबे आपनकर नियंतु थैंक यू okay once again good morning to you all and today I'm starting one topic new topic that is very common to all and this topic is what I told just a minute ago that is the brain of English understand the brain of English that is the brain of English means it is the tense pattern okay so first of all today we complete these ones that is called the tense and the time and the concept clearance of the concept for this one then we go through the another topics again so after this completion of the topic you will know everything gote katha prathame janima tense ta jetebele clear hei jaye सेतबेले से टेंस टा को नेकी आम अन्य ग्रामर सब तो कर तेणु से ग्रामर गुड़िक करने आमको प्रथमे टेंस बेस्ट आउ ठीक करा पड़ो लोक मैंने डरती पिला डरती टेंस कौन यहाँ किसी ना गोटे इजी वे रे आपण माने गोटे मेथड तैयारी आनी सिंपल भाव में बुझेबी तार डिस्क्रिप्शन देवी लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट सब टेंस को डिवाइड करवा तार कहार यूसेज केते को देखा तापर आम आगे आगे जा मोटे डरबार नहीं किसी करबार नहीं जस्ट एंजॉय इट एंड वी आर गोइंग थ्रू दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर टुडे time and tense eta mu prathame kahibi what is time what is tense then we go through the uses of time and tense okay so the definition is here that time is a broader concept okay time is a broader concept is a fundamental I'm discussing gote jinsa mu prathame ke छोट कथा कहूँ आरंभ कर टाइम हूँ गोटे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इट बिगिन्स फ्रॉम अ मोमेंट अ सेकंड देन अ मिनिट एन आवर देन अ डे अ वीक अ मंथ अ ईयर a century and up to continue still generation to generation okay it is a broader concept but tense is a narrower concept tense is a narrower concept it is a tense is what or narrower concept it is narrower concept because changing of a verb based on time is called समय अनुसार क्रियार परिवर्तन को कहा जाए काल टेंस कहते काल ओडिया रे समस्त कहते काल समय सब एका किंतु एटा एका नुहे एटा होचे भिन्न समय गोटे अलगा कथा काल गोटे अलगा कथा तेणु से गोटे होची ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये होची नैरोर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंजेस व्हाट आई से नाउ इट इज प्रेजेंट व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे इट वाज पास्ट व्हाट विल बी सेड इन फ्यूचर इट विल बी फ्यूचर टाइम so different type of actions are done in different time that is called narrower concept that is called tense तेणु tense गोटे अलगा पाठ जहाँ की निहाती दरकार आमर ब्रेन ता कहती tense होची ब्रेन को आम केमती यूटिलाइज करवा सो एई जिनस परे मु तापर कहबी आपण मानकू दैट इज
two kinds of tenses. दुई प्रकार tenses. There is two kinds of tenses, such as number one, the present tense. Number two is the past tense. Number two is the past tense. Understand? It is the past tense. Number one, present tense. Number two, past tense. दुई प्रकार tense अछि. Each tense is divided into four kinds. What is this? Four kinds such as between A. Four kinds such as A, simple, B, progressive, that is called also continuous. Progressive jaha pila mane continuous boli taku ame kah. Ebon C re ame naba, that is called perfect. And D, four types, it is perfect progressive, or continuous, okay. आमे देखिबा perfect progressive, perfect continuous. चाची प्रकृत टेंस होची दुई प्रकार. गोटे होची the present tense, another is the past tense. The present tense, another is the past tense. Okay, what is progressive? That is continuous. जोटा कि continuous बोली आमे जहा कहू न्यू टर्म, that is progressive also. Progressive जहा continuous से, perfect progressive जहा perfect continuous भी जहा. Okay, तो each tense is divided into four kinds. गोटे होची simple, गोटे होची progressive or continuous, गोटे थर्ड होची perfect, fourth is perfect progressive or perfect continuous. Similarly, simple present simple, simple present progressive or continuous, present perfect continuous or progressive. Similarly, the past tense is what? Simple past tense, past progressive or continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, तापरे आमे एठु अनुमान करिया पिला माने नेक्स्ट को जिबा ते कोन करिबा ना, there is no future tense in English because there is no future form of a verb in English. आपण माने जानुथिबे फ्यूचर रा फॉर्म नाही वर्ब रा. वर्ब नथले तो जानछि मु कहि इंग्लिश हबनी. माने वर्ब जतले प्रेजेंट टेंस वर्ब अछि, पास्ट टेंस तार वर्ब अछि, किंतु फ्यूचर वर्ब नाही, तणु फ्यूचर टेंस नाही. Okay, according to the grammar in the modern age, tense is of two types. One is the present tense, another is the past tense. Okay, future tense, there is no future tense in English because there is no future form of a verb in English. So we can use simply the future time. We use the future time. Future time means future expressions are used with the future time, means there is different type of uses are there. Sometimes also we use present simple, present progressive, present perfect for the use of future action, and the modal shall or will, it is also used for the present future action, for the future action. Okay, let us discuss one by one. आमे गोटे डिस्कशन करिबा. आमे समस्तंकर यूज जेतेबेले जानि दबा, we are able to write perfectly because this is the brain, and uses of the tense is the brain of English. So we can use it perfectly and that is without any fear. Okay, let us cooperate me. Different tenses are uses of different tenses with different points. Simple present, present continuous or progressive, present perfect. ओके, तो आमे कोन करिवा वर्तमान मु गोटे यूज आज आपण मन को वर्तमान करिवि, दैट इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तार टिके सबुठारो बेसी यूज. तार मु आपण मन जानिथिबे 3 की 4 की 5 की 6 मु आपण को 10 परे आउरी एग्जांपल दे की पॉइंट देबी जोडी की आपण जानि परिबे ए रो यूज आमे को जगह रे करू. इट वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तापरे आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंती यूज करी चलिबी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु लिखि परिबी वर्तमान जे आमे प्रेजेंट टेंस को तळे करिया को जाउचे. प्रथम मु आजि आरंभ करिवि. तो द सिंपल जस्ट मु लिखिबी वर्तमान
the simple present tense टिके मार्क करंतु ए सिंपल प्रेजेंट टेंस टा कोन आपे गोटे स्ट्रक्चर आमे कर दबा स्ट्रक्चर कर देले आमे जानि परिबा ता मेथड टा कोन लिखे स्ट्रक्चर एटा होची सब्जेक्ट वो शॉर्ट फॉर्म में लिखुची सब सब लिखली शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस v1 मींस बेस वर्ब s और es थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाई s और es and object plus complement okay this is the method after this you know so when it is now structure first it is the in affirmative structure if it is negative we can use do does or did do does for the present and did for the past no requirement at all today if in negative sentence comes do or do not does or does not okay like this also ठीक अछि वर्तमान हमें जनरल यूज रे जिबा तापरे मु नेगेटिव इंटरोगेटिव परे 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 हमें करी ओके ठीक अछि हमें लिखि चलीबा देखि चलीबा कोन कोन करिबा तापरे मु यूज करबी हमें तापरे व्यवहार उडी को ठीक करे जानि पारले हमें तो एग्जांपल इंप्लीमेंट करबा इजी हो हम पे करिया पे मोटे डरिवार नै अछि एग्जांपल्स दबा हमें किछि चिंता करबा कोन करिया पे ठीक है देखंतु फर्स्ट मु लिखिबी यूजेस 1 okay first of all it is uses 1 so how can you use in different uses first use is now the simple present is used to express habitual action habitual action habitual action okay so habitual action what is habitual action means अभ्यासगत काम कोन हमें करसे प्रतिदिन हमें 6टा 5टा बेल को मु उठुची आउ वर्तमान मु प्रतिदिन सकाळ स्कूल को जाउची सकाळ मु मॉर्निंग प्रेयर करूची मार्केट एति समय रे जाए एवं मामू मोर ए घर को आसंती वर्ष को थरे मो सांग प्रतिदिन आम घर को आसंती ए सब कथा गुडी प्रतिदिन प्रति संध्या रे प्रति मुहूर्त रे ए जो जिंस गुड हम यूज करूचे को कहते हमर हैबिचुअल एक्शन से हैबिचुअल एक्शन इन ओडिया रे जतले हमें कहूचे प्रतिदिन प्रति संध्या रे प्रति बेले हमें तो कहूचे ताले इंग्लिश रे तार कोन हबो तेनु इंग्लिश भी गोटे एडवर्ब अछि तेनु हमें केम जानिया जतले एग्जाम रे पढिबो ए एडवर्ब गुडा देइथिबो एटा को टेंस हबो तेनु एडवर्ब रु हमें आइडेंटिफाई करबा ए जो टेंस गुडा कोटा टेंस बोली हम तेनु हमें देखिबा कोन हमें लिखि परिबा एठी हैबिचुअल एक्शन इज आइडेंटिफाइड by the use of some adverbs okay so what is this use of some adverbs such as मु लिखि दोछ टिके always usually generally frequently rarely seldom often every day every morning okay etc once a month year etc several times a month year etc देखंतु एगुडी कहूची हैबिचुअल एक्शन रो एडवर्ब अभी के जड़ी एग्जांपल ले पढ़िथिबो एग्जाम ले पढ़िथिबो सो एग्जांपल ता बर्तन म देबी एटा को आपण अनुभव करंतु एई जिंस ओडी को थिले आमे याकू कहू हैबिचुअल एक्शन एवं वर्ब हबो सिंपल प्रेजेंट फंडामेंटल कोन देखिबा तो आगुर देछि और एक पॉइंट देछि आगु देबी एवं एई गुटी को प्रेजेंट टेंस ता टिके बडो प्रेजेंट सिंपल ता टिके बडो आ सब 3टा 4टा 5टा 6टा पॉइंट कितो ओडी बार नाही एवं जेतेबेले मते दाहा दरकार मते कहिबे कोन 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 आमे देखुछि अच्छा वर्तमान आमे देखुचे तो आजी मोन हां आजी दिस इज द फर्स्ट क्लास मोर आज फर्स्ट क्लास नोच मोटा को देखो तो ठीक अछि देखो सेवरल टाइम्स अ मंथ ईयर एटसेट्रा हमें यूज करूचे फॉर एग्जांपल मु तुमको गोटे यूजर लिखबी आई गोटे एग्जांपल मु एठी देबी ओके गोटे एग्जांपल मु दोछि आई
always go to college by bus. You see, गोटे कथा मार्क करंतु एडवर्ब अछि कोन ने always. एडी go अछि काहे पिला माने go हला ना I is the first person. I रे first, we रे first, we रे थी I रे I we तार बेस verb रहइबो. He she जेतले आसी जीवो तापर तको हमें कोन करबा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मन करंतु आउ गोटे एठी मु लिखिली he always एठी हबो goes काहे कि ना आमे goes to college by bus. He काहे कि he is the third person singular number, always indicates habitual action, the verb becomes here goes. Understand? अच्छा मु आउ गोटे आपन को आउ गोटे पॉइंट एग्जांपल करूची तो लिखिबी my friend comes here every day. देखंतु ए एवरीडे इंडिकेट करूची habitual action adverb तेणु एटा हबो सिंपल प्रेजेंट जेतु माय फ्रेंड का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तागला comes. Understand? It is comes. Okay. For example, my uncle comes our home once a year. Once a year. Once a year indicates habitual action. Because why? मामू आसंती आम घर को मामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स आसंती थरे आम घर सावित्र मा आसे मम्मी पे लुगापटा साड़ी नहीं आसो मामू आसब तेणु वन्स ए इयर केबे केबे न आसले नहीं तेणु सावित्र मास आस बाध्य कारण नहल नहीं भौणी गाड़ी कर मम्मी तुम गाड़ी कर तुम मामू को बुझिपारे तो देख लो ये अच्छी माय अंकल कम्स हियर वन्स ए इयर मास को वर्ष को थरे ओके दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन तेणु दीज एडवर्ब्स आर the symbol of indication of habitual action तेणु आमे habitual action को आमे कोन करिबा habitual action को आमे कोन करिबा जे आमे सबले सिंपल प्रेजेंट करिबा तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लुरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लुरल ले बेस वर्ब और थर्ड पर्सन सिंगुलर ने yes or es लिखिबा ओके इट इज द नंबर 1 यूसेज हैबिचुअल एक्शन तापर हमें नेक्स्ट पॉइंट को जिबा ओके यूजेस 2 को जिबा हमें यूजेस 2 रे लिखिबा कोन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ जोटा कि ओडिया रे कहंती सार्वजनीन सत्य चिरंतन सत्य ताकू आमे कहू कोन पृथ्वीटा सूर्य चारिपटे घुरुछि सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुंती सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त जानती महू खाइबा को मीठा लागे ए सब जिनिस होछि नेचुरल कारण नेचर करछि प्रकृति करछि आमे किछ करने तेणु एटा प्रकृति ता कोनती यूनिवर्सल ट्रुथ तेणु आमे लिखिबा एटा द सन राइजेस कहीं कहली ना सनटा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर एटा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर राइजेस हबो इन द ईस्ट कारण ये होची थर्ड पर्सन सिंगुलर आउ कोन करबी मु कहबी हनी टेस्ट्स स्वीट कहीं की ना हनीटा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नो टेस्ट्स होची स्वाद बारिबा हमको महू मीठा लगे बिकॉज honey is made by God. Honey is made by the insect. Which insects are the production of a God? भगवान के द्वारा तैयार है हनी रे के चीनी मिसई देनी तेणु मन को मन से मिठा है तेणु सेटा कोन हनी टेस्ट्स स्वीट एटा होच पिला माने कोन सेकंड यूज ओके तापर हमें थर्ड यूज को जिबा तो थर्ड यूज रे लिखिबा हमें कोन थर्ड यूज रे लिखिबा तो कोन the simple present is used to express scientifical truth कौन करीबी ना scientifical truth okay so scientifical truth कौन जोटा कि विज्ञान हमको कहूची
सार आम क्लास रे पाठ पढ़ाई तेणु सार आम कहते कौन वाटर बॉयल हूँ 100 डिग्री सेल्सियस रे वाटर बॉइल्स at 100 डिग्री सेल्सियस तेणु बॉइल्स कहीं करछि ना वाटर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर ओके एटा कहंती हमर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मु कहबी आ गोटे आइस melts in the sun खरा हेले आइस टा तरली जाए हूँ साइंटिफिकल ट्रुथ आम गोटे कले हाबिचुअल एक्शन गोटे कले यूनिवर्सल ट्रुथ गोटे कले आमर कौन साइंटिफिकल ट्रुथ बर्तमान आम फोर्थ पॉइंट को जीवा ये पिला माने देख फोर्थ पॉइंट रे केते गोटे डेविएशन अछि आम रूल गुड़ मन रखुचे करे पड़ो कहीं ना ये जिनस टेन्स हूँ मुख्य प्रथम कही जिनस शुणीदेला आम जा तो आउ गोटे फोर्थ यूज हम ना द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस आमे कौन करवा न्यूज हेडलाइंस तो आमे देखो चिंता करवा न्यूज हेडलाइन हम सब सिंपल प्रेजेंट हम किंतु डिस्क्रिप्शन है सिंपल पास्ट हम ओके एग्जांपल करवा बड़े एग्जांपल हम लिखा फायर engulfs 20 houses last night देखंतु पिला माने लास्ट नाइट एंडी करछि हाबिचुअल एक्शन किंतु एठी मु एनगप्स कली कारण एठी होछि न्यूज हेडलाइन हमें लिखिबा एठी आउ गोटे एग्जांपल द ऑनरेबल पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल पीएम arrives here yesterday आम एठी कले yesterday सिंपल पास्ट होबा कथा किंतु arrives हो बिकॉज इट इज न्यूज हेडलाइन ट्रक कोलाइड्स बस गोटे बस सहित ट्रक रो धक्का एठी कोलाइड्स करछ आमे किंतु एटा काई कोलाइड्स करिछ एठी एटा न्यूज हेडलाइन किंतु डिस्क्रिप्शन हेले तले आमे लिखुचे यूज ट्रक लोडेड ट्रक कोलाइडेड विथ अ बस एटा को आमे लिखबा डिस्क्रिप्शन बेले किंतु हेडलाइन लिखिया पे केवल आमे लिखबा ट्रक कोलाइड्स बस एटा होची सिंपल प्रेजेंट ओके ये गोटे पॉइंट आपन गला तापर आमे जीवा नेक्स्ट को आ गोटे पॉइंट को जीवा आ गोटे पॉइंट रे आमे लिखिबा तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जहा के हला आमे लिखिबा आ गोटे कोन करिबा ना व्हेन an exclamatory sentence begins with here or there okay exclamatory sentence begins with here or there exclamatory sentence ta begins with here or there the verb becomes a simple present exclamatory mark is at last must it रहिथिबो पछरे exclamatory sentence मन करंतु बाहर को जाउची बाहर को जीवा भितर हठात गोटे सापटे एमती खेली आसुची कौन करी मुझे बाट एमती माने कौन गोटे सापटे मो आड़ को आसी जाऊँगी साप मैं डरीगली मु एक्सक्लेमेशन हवा इमिडिएटली कारण मुझे जान नी हम बोली तो से मुझे कौन कली आम लिखिदे पार्बा एठी एग्जांपल ले हियर क्रॉल्स अ स्नेक किंतु एक्सक्लेमेटरी मार्क दबा लास्ट रे एवं हियर रहिला वाक्य आरंभ एटा एक्सक्लेमेटरी एटी हमें क्रॉल्स कले काहेकि स्नेक टा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बुझियला एटा अछि आ गोटे एग्जांपल दे दोची देयर कम्स अ पुलिस वैन हे पुलिस वैन टा आछी कोइ हम आश्चर्य हे होची पुलिस वैन टा आछी कहला बेलकू हम एठी एक्सक्लेमेटरी मार्क देइछे एठी देयर रहिछि वाक्य आरंभ एटा होची कम्स कारण पुलिस वैन टा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओके ए भलिया कथा एठी गोटे पॉइंट कला अच्छा तापर हमें नेक्स्ट पॉइंट को जीवा 5 और 6 पॉइंट लिखिया कोन इट शोज एक्जिस्टेंस
बुझिपारछ पिला माने एक्जिस्टेंस मु एग्जांपल देबी तापर याड प्रैक्टिस करबी केमति होछ एग्जाम रे क्वेश्चन पडिबो कोन होबो डिस्कशन करबा केमति को रूल को का फॉलो करबा आगटे एटा को एक चिंता करके ध्यान दियंतु केमति केमति हमें होछ ओके हमें देखुचे there comes a police it shows existence exist means belonging करबा रहिबा मु एठी वर्तमान क्लासरूम रे ठिया आइछि I think I am here means I exist here I think I am here I am here means I exist here be verb simple present हमें एट लिखि पारिबा another example God is omnipresent God is omnipresent God is omnipresent means God exists everywhere भगवान सर्व विद्यमान अंडरस्टैंड त कोनती एक्जिस्टेंस ओके ओके ई गोटे पॉइंट कला तापर मु आ गोटे पॉइंट को जिबी तापर आ गोटे पॉइंट जिबी आ गोटे नेक्स्ट पॉइंट को जिबी कोन करबी लिखिबी the simple present is also used to express what vivid action of immediate past vivid action of immediate past what is this vivid action of immediate past means जो action 100% सत एवं आम खिरे घटीगला कहते vivid action मु बर्तमान एठी ठिया आइछि क्लासरूम रे गोटे पागल आसला एंट्री कला मते गोटे जोर गोटे स्लैप कल तो पड़ेला मते पेन हला गली ओहो एंती होली बट यू आर द आई विटनेस तो मो सामने रे घटला जदि के somebody पचारंती सर सुदीप सर पचारंतु शिशिर सर पचारंतु अरे कोन हला तमे कोन कहबो सर गोटे पागल आसला सर गोटे चापड़ा पड़ दे पड़ला माने कोन एटा immediately because it happened before your eyes understand तेणु आमे एठी कोन करबा एट लिखिबा आमे सर ले पचारले immediately a mad comes and slaps him. A mad comes and slaps. Both are simple present because it is now happening before your eyes. It is already omitted, completed, and you saw it, and you observed it, you enjoyed it. आमे अच्छे ओके आमर चाकरी मिलूनी आमे कौन करिया गोटे रैली करिया एटा खबर देले आगु पुलिस डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री चैम्बर आगे आज आम धारणा देकी बसु कौन करवा ये कथा शुणी जो आमर मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहले ना काली से आसवे यार मत हैरान करेंगे तो देखा कौन हो किंतु पुलिस माने कहले नहीं 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 ठिया देखा सर कौन हो देखा केते पिला आसवे कौन करेंगे आम एमती लुह बुहा गैस छाड़ीदवा जे पलैबे किंतु भितरे भितरे से डरी जाइछंती तेणु जेतेबेले गोटे रैली बाहरी पड़ी सेतेबेलकू आमर मुख्यमंत्री कौन करछंती गोटे गामुछा पिंधिकी पाइखाना को दौड़ुछंती आमे हे 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 मुख्यमंत्री पळै रे मुख्यमंत्री पळले कहला कोन अरे गामछा क्लाड चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू लैट्रिन माने भय रे पळौछंती हमको देखिकी बुझ पाछ तो तेणु आमे कोन करिबा हम पळौछन भय कि आमे लिखिबा एठी इमीडिएटली जदि ए केस रे घटते इमीडिएटली द सीएम goes to लैटिन लिखियानी लाज माड़ बुझे गोज टू असेंबली हॉल तेणु आमको देखिकी गोज माने वेंट किंतु व्हाट हैपेंड बिफोर योर आईज अतीत काल घटिला तेणु ये कहते आमर कौन अतीत काल घटिला एवं ये कहते आमर कौन व्हाट इमीडिएट विविड एक्शन of the immediate past आखि सामने रे जो घटनाटा घटला that is completely vivid action okay सेति में ताको हमर कहंती goes कारण एटा हला simple past यूज करले okay तो let us another point को हम जिबा तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन होछि देखिबा जदि किछि डाउट होछि हम टिके पचारिबा करिबा मु तार भलो नोट मु एक्सप्लेनेस कर दे पूरा एक्सप्लेन कर देबी क्लियरली तम पाको नोट पठै देबी क्लियर आ व्यस्त ओरडी हबार नै मते खाली कहिबो कोन कोन प्रॉब्लम आ जोदी मु एटी गारंटी देबी 100% जीए टेंस टा क्लियर कर दबो ही इज द मास्टर ऑफ हिज और हर ओन हमको
आम गुरु भी से कहते जी टेन्स टा क्लियर करदब सी इंग्लिश मास्टर नो डाउट एटा अजथा डरिबा आमे फोनेटिक्स करबा स्पोकन इंग्लिश करबा टिप्स देबी मु तार फोनेटिक्स रो साउंड सिंबल तापे क्रिएट करछि मु निजे लेखिछि तापे कर देबी तम मान पे देबी आमे एटा को यूज करबा बेटर वे रे आफ्टर 11 ईयर ऑफ प्रैक्टिस आई हैव डन इट मते 11 वर्ष लागिला करिया पे 11 वर्ष परे मो प्रोफेसर मते सिखैतले या धीरे 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 मु सेटा निज हाथ रे लेखिछि केमते ओडिया पिला माने सिखि परिबे तापे मु एटा क्लियर कर देबी नो डाउट एट ऑल किछि व्यस्त हवा दरकार नै ओके ठीक अछि तो आमे नेक्स्ट पॉइंट को जिबा कोन करिबा द सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस कोटेशंस ले कोटेशन को आमे यूज करबा को जिबा सेते बेले से कोटेशन उडी को जतले जिबा आमे सिंपल प्रेजेंट यूज करबा देखे देखंतु मु एटी कोटेशन कोन कहबी फॉर एग्जांपल मो my father says no pain no gain देखंतु इट इज अ कोटेशन एटा गोटे कोटेशन माय फादर सेज काइंड कहली पिला माने माय फादर होचंदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बुझियला माय फादर होचंदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तने मु कोन कहली माय फादर सेज अच्छा आ गोटे कोन करबी ना जॉन किड्स says कौन कले a thing of beauty is a joy forever okay thing of beauty a thing of beauty is a joy forever के कहले जॉन किड्स सेज कारण जॉन किड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसु थाए ए जो कथाटी हमर ओडिया रे लिखा जाईची एट जो अछि आमे करबा ओ तडु आमे चिंता करूचे हां तणु आमे वर्तमान आरंभ करिया अनेक पार्ट आगु अछि मु जानि परिबी आगु को कोटेशंस अछि पिला माने केते अपील करछंती वर्तमान मो अनुभव कर परछि डायरेक्ट स्पीच करबा इनडायरेक्ट स्पीच करबा आउ आमे एनालिसिस करिया भविष्यत रे आ एग्जाम पे किंतु प्रिपरेशन करबा तापे मु सेटिंग करबी सब कथा मु देबी व्यस्त होंतुनी मु आगो टिके फंडामेंटल कांगी सारुची आमे जिंती घर गोटे तयारी करले फाउंडेशंस टाकू निहाती गोटे स्ट्रांग कला पर आमे 5 महला तयारी करके 2 महला करिया चिंता करिया सेमती इंग्लिश पाठ पढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आमे टेन्स टाकू कंप्लीट करा को बाध्य एवं मु फर्स्ट पर्सन आम माने फर्स्ट पर्सन प्लुराल यू सेकंड पर्सन ही सी थर्ड पर्सन दे पीपल पुलिस पब्लिक से सब प्लुराल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन ये सब कॉमन सेंस गुडे को आमे आगो नेला परे मे ताको आउतबा मु बर्तन इन फ्यूचर मटे पब्लिशिंग करिया गोची 5 वॉल्यूम गोटे इंग्लिश ग्रामर गोटे बड़ सेटा को मध्ये आपण मान को मु अन्य थ्रू रे जणैबी सेटा पब्लिकेशन हबो आ किछ दिन परे सेडा को आपण मान नेबे सब कॉम्पिटिटिव जिंसर बहुत कथा मु ता भितरे लिखि देछि ओके तो वर्तमान इट्स अ चांस मु आगो थ्योरेटिकली से बहिटी दबा पूर्वरु मु थ्योरेटिकली आपण मान को आगो टिके इंट्रोडक्शन देके पढौछि तापर टिके एन्जॉय करंतु ताकू नेला परे हमें अन्य गुडी को इजीली हमें तापर नै परिबा बहुत इजीली तापर नै परिबा देखंतु फर्स्ट रे तो एटा गोटे कटल पडल अच्छा नेक्स्ट हमें आ गोटे पॉइंट को जिबा आ गोटे पॉइंट रे मु लिखिबी जो simple present is used instead of present progressive to express sports events in broadcasting commentaries हमें लिखा है कौन ना sports events in broadcasting commentaries ओके देखंतु गोटा ब्रॉडकास्टिंग कमेंटरी जे स्पोर्ट्स इवेंट जो करबा कोन करबा ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल रे सिंपल प्रेजेंट यूज ओके वर्तमान हम सामना रे दुईटा टीम धरंतु आजिकल तो फेवरेट गेम आपण मानकर कोन फेवरेट गेम आपनकर होची क्रिकेट वर्तमान मु इंडियन कैप्टन मते तो जणा नै क्रिकेट खेल कथा मु जानिनी मु खाली विराट कोहली आ से आपनकर से रोहित शर्मा से कपिल देव से सचिन तेंदुलकर टिके नाम खाली टिके जानि धरंतु मु होची किए ना विराट कोहली धरची बैटिंग करबी बैटिंग करू साडे टीवी रे आपण मन देखुचंती जणे कमेंटरी बॉक्स रे कमेंट दोची से कहवा कथा सेठी सो कोहली इज बैटिंग नाउ
लोक मान को जणा दरकार कोहली इज बैटिंग नाउ ऑन 80 रन्स ना दैट इज रॉन्ग से स्पोकन करियो माने कोहली बैट्स नाउ विराट बैट्स नाउ ऑन 80 रन्स से कह पड़ो कारण एटा होची स्पोर्ट्स इवेंट्स इन ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज विराट बैट्स ऑन 80 रन्स नाउ आमे जनरली गोटे नाउ भाभी देले जेतेबेले आमे एटा को बैटिंग बोली कहि थाते ना इट इज ए स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड इन स्पोकन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रेजेंट सिंपल एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट सिंपल इंस्टेड ऑफ अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस ओके एटा टिके मन रखितांतु आमे जेतेबेले स्पोर्ट्स इवेंट को जेतेबेले डिस्क्रिप्शन करबा इन फ्यूचर सेतेबेले सबोले कमेंट्री दबा कि गां गळी कोठ होची भलो मंद कोठ होची सब जते रनिंग कंडीशन रे खेल चलथिबो जो फुटबॉल हो क्रिकेट हो हॉकी हो जोटा कंटीन्यूअस होची आपण मान आगरे दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट सबोले सिंपल प्रेजेंट रे कहिबा आउ प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे कहिबा नाही ओके तापरे आसंतु आ गोटे मेजर पॉइंट टिके रिकॉल करई दूची मु कहितली फ्यूचर टाइम अछि फ्यूचर टेंस नाही एवं फ्यूचर टाइम ता केमते एक्सप्रेशन हबो ना फ्यूचर एक्शन उडी को ना मोडाल साल विल लगे कर हाई परिबो प्लस अदर टेंसेस कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन अदर टेंसेस मींस कोन कहितली प्रेजेंट रे हबो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट ये मध्य आमे फ्यूचर एक्शन पे यूज करबा दे आर द मेजर यूज किंतु से जो मेजर यूज बतरू आमे आज कोन पढुचे वर्तमान पढुचे कोन ना प्रेजेंट सिंपल क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कोठी फ्यूचर एक्शन पे यूज हो परिबो तार गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आपण माने नोट डाउन करंतु मोटा धीरे धीरे पढौची ठीक क्लियरली बुझाउ चेष्टा करंतु ए जो 2-3टा 4टा पॉइंट मु देबी या परे वेरी 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 इंपोर्टेंट बुझ पाले ठीक अछि किंतु देखंतु गोटे कथा नेक्स्ट पॉइंट मु एठी लिखुची द सिंपल प्रेजेंट is used to express what express near future action for which the time is scheduled or fixed in a future time देखंतु एटा गोटे सबुठारु बड़ सेंसिटिव पॉइंट एवं इंपोर्टेंट पॉइंट फ्यूचर एक्शन किंतु यूज हबो सिंपल प्रेजेंट काहेकि ना वेयर द टाइम इज शेड्यूल्ड हियर द पॉइंट इज शेड्यूल्ड मींस व्हाट फिक्स्ड according to time according to calendar according to the newspaper according to the official notice according to the advertisement or planning whatever it is तो एई सब जिंस रे जोठी टाइम ता फिक्स हे जाय थाए से जगह उडी करे फ्यूचर रे आमे सिंपल प्रेजेंट करिबा फ्यूचर बदल रे इंस्टेड ऑफ फ्यूचर केमती गोटे फ्यूचर रे मोटे केमती करिबा एग्जांपल गोटे करिबा we go to Puri at 8 a.m. tomorrow देखंतु 8 a.m. tomorrow इट इज फिक्स्ड आमे टाइम फिक्स करछे ट्रेन रे जीवा कि बस रे जीवा कोन जीवा सकाळ 8 तेनु आमे एठी गो लिखिले काहे ना उइटा होची प्लूराल मन कर एठी प्लूराल कले एठी आमे एठी फिक्स हिची आमे आ गोटे एग्जांपल करबी द ट्रेन arrives at the station at 7 a.m. tomorrow धरंतु at 7 a.m. tomorrow टा फिक्स हिची काहे ना टाइम शेड्यूल टा हिची कोठी रेलवे डिपार्टमेंट रे तेणु एटा आसी केतले पहुंचोले ट्रेन टा अराइव सेला काहेकि ना ट्रेन टा होचे थर्ड पर्सन सिंगुलर बुझ पारले धरंतु हमर आज प्रोग्राम अछि कॉलेज छुट्टी अछि आ कॉलेज 7 दिन 5 दिन बंद पुणी आउथरे गोटे आम कॉलेज खोलिबो केतेबेले आमे एठी लिखि परिबा द कॉलेज री ओपन्स
ऑन 20 सेप्टेम्बर एटा फिक्स ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल नोटिस ए सब कंडीशन जले ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କଲେ रीओपन्स कारण ये होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड मेजर पॉइंट ओके देन आउ गुटे कथा कहबी कोन कहबी नेक्स्ट पॉइंट से भी बहुत इंपोर्टेंट अच्छा कोन ना द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड व्हाट फॉर द फ्यूचर एक्शन इन अ रेस्ट्रिक्टिव वे जोटा कि हमको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन ना रेस्ट्रिक्टिव वे व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव वे गोटे रेस्ट्रिक्टिव वे कोन ना verbs must be in the form of going and coming verbs going and coming such as go come arrive embark reach okay leave leave return okay sell मान जल यात्रा करिबा sell fly set out set off etc एउडी कहि थिबो आउ कोन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रिंसिपली ट्रैवल हेथिबो आउ कोन रेस्ट्रिक्शन प्रिंसिपल ट्रैवल देन अनदर and it is time fixed time in future देखो तो गोटे कथा रेस्ट्रिक्टिव वे अर्थ verbs must be in the form of going and coming जिबा आसीबा कौन से गो हबो कम हबो अराइव हबो एम्बार्क हबो रीच हबो लीव रिटर्न सेल फ्लाई सेट आउट सेट होची जिबा आसियार verb एवं आउ कोन verb जिबा आसियार verb परे आ गोटे verb होच कोन प्रिंसिपल ट्रैवल तो केवल यात्रा आम कौन जर्निंग रही तो verb गुड़ा एवं ऑन कौन फिक्स टाइम इन फ्यूचर टाइम फिक्स हेतु इन फ्यूचर एंड आउ गोटे पॉइंट हेतु कोन ना प्री प्लान्ड आगरु आमे योजना करिथिबा प्री प्लान्ड ये सबुतक मिसिला परे याको आमे कोन कहिबा ना रेस्ट्रिक्टिव वे ये सबुतक होची रेस्ट्रिक्टिव वे अंडरस्टैंड कोनती रेस्ट्रिक्टिव वे एटा को थिबो जदी आमे सिंपल प्रेजेंट करबा फ्यूचर पाए ओके ओके गोटे एग्जांपल दोछि अपन देखो कोन हबो एग्जांपल मु लिखिबी वी सेल हर चेन्नई 8 AM टुमारो देखंतु 8 AM टुमारो टा फिक्स है टाइम 8 AM टुमारो एवं आमे सेल करिबा सेल माने यात्रा करिबा जल यात्रा पानी रे जहाज रहू डोंगा रहू अबकर रहू सम सेल कले एवं वी हला प्लुरल तेनो एटा सेल हला एवं सिंपल प्रेजेंट हला वी विल सेल वी शाल सेल हबो नाही ओके ई गोटे कथा गला नेक्स्ट आ गोटे कथा कहबी धरंतु माय फ्रेंड embarks here at 12 tomorrow एटा फिक्स हला एवं embarks माने रीच करिबा अराइव करिबो एवं माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सेति में एटा हला embarks एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट फ्यूचर रो शेड्यूल एक्शन फिक्स्ड एक्शन रे सिंपल प्रेजेंट हला एवं फ्यूचर रे embarks रेस्ट्रिक्टिव वे रे बता ये गोटे हला तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देबी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि आमे चिंता करछे कोन करबा देखो जोटा कि गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अछि कोन से इंपोर्टेंट पॉइंट मुटिके लेखुछ नेक्स्ट पेज को जाय कि लेखुछ सिटा होछि कोन से पॉइंट होछि देखंतु व्हेन द verb of the main clause refers to verb of the main clause refers to future action the verb
of the subordinate clause becomes simple present instead of future when it begins with what? Begins with till, until, as soon as, when, before, after, if, etc. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ମୁଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ୟୁଜ୍ ହବ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ପାର୍ଟ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିଭ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ଲଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ? ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦ ମିନିଂ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ର ଭର୍ବ ସବଜେକ୍ଟ ସହ ଅର୍ଥଟା ପୁରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ପୁରା ବୁଝା ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ବୁଝା ପଡୁନି ତାକୁ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ପାର୍ଟ। ପିଲା ଏଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ସାର୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ତାହେଲେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ସତ ନା ମିଛ? ঠিক ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ମୁଁ କ୍ଲଜ୍ ପଢଉନି, ଖାଲି ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଟା ବୁଝେଇବାକୁ କହୁଛି, କ୍ଲଜ୍ ପାଠ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ, ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ପଚାରିବ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବା କେତେବେଳେ? ନା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ପାଠ ପଢା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି we shall leave the class when the teacher will stop teaching। ଦେଖନ୍ତୁ এই সেন্টেন্সটা ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ it is divided into two parts. What is this? We shall leave the class, it is divided here. When the teacher will stop teaching, এটা ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? We shall leave the class, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା, ବୁଝା ପଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି when the teacher stop teaching, when the teacher will stop teaching, ମାନେ when the teacher will stop teaching ମାନେ we shall leave the class। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଲଜ୍ ପଢଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ଯାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝା ପଡେନି, ବାକ୍ୟଟାକୁ ଅଧା ରହେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝା ପଡିଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ତେଣୁ ଏଇଠି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ କିଏ? we shall leave the class। ତେଣୁ ୟା ଭର୍ବଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ରେଫର କରିଛି shall leave, କ'ଣ କରିଛି ନା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ବି ଫ୍ୟୁଚର ହବ। ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସାର୍ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଦିଟା ଯାକ ଫ୍ୟୁଚର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? when the teacher will stop teaching, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା? ଡେଫିନେସନ କହୁଛି when the future action becomes refers to future action, the verb of the subordinate clause becomes simple present instead of a future when it begins with till, until, as soon as, when, before, after, if, etc. ତେଣୁ ଏଇଟା
काहाकु नै के आरंभ होईछि व्हेन को नै के आरंभ होईछि तेणु जेहेतु एटा व्हेन को नै के आरंभ होईछि एटा विल स्टॉप टा रॉन्ग अंडरस्टैंड भूल सेटा हबो सिंपल प्रेजेंट जेहेतु वी शैल लीव द क्लास व्हेन द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर stops teaching understand this is very very important आमे लिखिबा we shall leave the class when the teacher stops teaching बुझिपारे पिला स्टॉप्स है काहे ना एटा व्हेन को नै के आरंभ हला एबो एटा फ्यूचर मीन एटा हो ठीक आमे जानि परिबा जतबेले हम कोड करबा जे ए पोजीशन जतबेले मेन क्लॉज ता रहिला हमरो फ्यूचर को इंडिकेट कला सबऑर्डिनेट पार्ट हला स्टॉप्स देनी परंतु आपण माने एठी क्लास रे अछंती तो कॉलेज रे अछंती तुम कहबे तमे कोन करबा ए तमे अंकिता तमे कोठी केमती घर को जीवो ना सर बापा आसले मु घर को जीवी अंकिता कहबो आई शैल गो होम as soon as my father reaches understand reaches thank you now it starts with as soon as and this is main clause I shall go home as soon as my father reaches is the third person singular number hila my father is third person singular ई गोटे पॉइंट पिला माने गला इंपोर्टेंट पॉइंट तापरे नेक्स्ट मु 13 पॉइंट जोटा देबी लास्ट रे सिंपल प्रेजेंट पई सबुठारु एटा लास्ट पॉइंट एवं बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी एवं जहाँ को आम यूज करुचे कौन कौन करवा से केतेटा स्वतंत्र भर्ब अच्छी जो भर्ब गुड़िक सबु बेले सिंपल प्रेजेंट रे यूज हुए इनस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस से भर्ब गुड़िक लिखे आम पढ़ुचे कौन प्रेजेंट सिंपल कथा पढ़ुचे तेणु प्रेजेंट सिंपल सब यूज मु कंप्लीट करदेबी ओके देखंतु कोन करबा आमे नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट एटा लास्ट पॉइंट सिंपल प्रेजेंट रे एटा होची लास्ट पॉइंट आमे लिखिबा पॉइंट पदार्थ इट इज 13 नंबर आई से देयर आर certain verbs which are always used in simple present instead of present continuous प्रेजेंट एटा परीक्षा रे पिला माने बहुत थरा आसीबो हमको कंफ्यूजन करई दबो आमे कंफ्यूज्ड हे जिबा बहुत परीक्षा रे काहे एटा से एग्जांपल ले आमे जते बेले एई भर गुडी को पड़ी जिवो ब्रैकेट रे पड़ी थिबो तार रियल फॉर्म बा चारटा फॉर्म पड़ियो कोटा यूज करबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस पड़थिबो प्रेजेंट परफेक्ट पड़ियो सिंपल प्रेजेंट पड़ियो विभिन्न प्रकार तुने आमे ताको सिंपल प्रेजेंट करबा काहे करबा केमति करबा को भर गुडी को टिके मन रखंतु से भर गुडी कोन सच आज आमे से भर गुडी को लिखिली मु सच आज कौन करबा लिखिबा हमें सी हियर मीन्स सुनिबा देखिबा सुनिबा स्मेल टेस्ट नोटिस रिकॉग्नाइज बुझ पाले रिकॉग्नाइज अपीयर सेम लुक ओके want wish desire hope okay promise prefer feel think suppose okay suppose trust okay trust love hate like dislike understand know
acknowledge, acknowledge, possess, contain, consist of, belong to, have, etc. ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମନକୁ that is sufficient. These are the sufficient words and these are always making confusion in the examination which tense should be there, and these verbs always you are used in present simple. एई verb गुडी को सबुबले आमे simple present रे यूज करिबा present continuous रो बदल रे, present continuous रो बदल रे आमे एटा को यूज करिबा सबुबले simple present. कोन करिबा for example the sky looks cloudy today. आमे is looking केबे करिबानी, एटा करिबा looks, कारण एटा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर द स्काई. आमे लुक्स करिबा काहे कि ना एटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हबो नाही, सिंपल प्रेजेंट हबो. आमे लिखिबा एठी द फ्लावर seems beautiful, beautiful. The flower seems beautiful. I love my parents. I love my parents. I am loving my parents हबनी. पिला माने मन अछि गोटे कथा बुझि परछो. I am loving my parents. तेणु मु एई कथाटी तो आज फर्स्ट क्लास पढुछ मोर कहिया कथा नुहे, गोटे कथा गोटे मजा कथाटे अछि, छोट कथाटे. मोर गोटे स्टूडेंट थिला, ए तो वेरी नॉटी, दुष्ट पिलाटे. माने when I joined a new job I was at that time only 22. Completion of my first part I joined there 22, and he had failed for 3 or 4 times before that. 3 थर कि 4 थर पास करानी, ताको हिरानी 21 वर्ष. बुझ परछ सी गोटा बदमाशी करियाकू मो क्लास रे पसि जाइथिला. काहेकिना सेठी दरमा मिलुथिला मते 200 टंका, ट्यूशन करथिले मो पाए 50 पिला, मते दरमा मिलुथिला 200 टंका. 50 पिला ट्यूशन करे भितरे सब 25 टंका 30 टंका ट्यूशन फीस. को जगह कोन मु कहिबिनी, लाज माडिबो. सुनंतु एई कथा भितरे से पिलाटी दुष्टटी मो क्लास रे पसि जाइछि. पसि माने अन्य मु टिके साइकल स्थळ जाए 60 किलोमीटर साइकल ऑन माय साइकल राइडिंग इट मु जाए 60 किलोमीटर. तो गला बेलू सी सब से क्लासरूम भितर एटलिस्ट 30 प्लस झील आउ 15टा कि 16टा खंड पुओ बसता. से भितर से पिलाटी बसची, पिलाटा किंतु देखा बहुत हैंडसम, ऋतिक रोशन भाया देखा चेहरा से से मुझे एंट्री कली क्लास रे 20-15 मिनट लेट है तो बाटर गला बेलू से झील मैंने खाली नाक टेकुंट होती रागी किए बोले कि ये कौन कहीं हो कौन पे तो रागुन कहला बेलू समस्त आखि गोटे जगह को फोकस टू द बॉय. बोले अरे स्टैंड अप से कहला बेलू से कह यस तुम ना कौन तुम ना तो पचारि से कह मो ना. अच्छा तुम कहीं एंट्री कर सॉरी सर आउ टे भूल होगा मुझे पलि आसली तेणु तो कौन करवा अच्छे मुझे कौन कर मुझे पढ़ी. ठीक अच्छे कहले आपण कॉलेजर प्रेसिडेंट मो नाती. बोले सो व्हाट ना नाई नाई सेमती किसी ना मुझे आसती पढ़ापी हाउ बोले क्लास सरला पर देखा टे छोटिया कथा टे कह तुम मैंने बोर फिल करनी यही वार्ड टी पढ़ला बोली ये लव वार्ड टी मुझे कहनी से कौन है मत सी कहूँ जे सार मो घरे मत पैसा पत्र देवेनि मुझे ट्यूशन करी बोली 2-3 थर फेल है बोली तुम एज के 21 बोल 21 अच्छा ठीक अच्छे हाउ तुम एत थर कहीं फेल हो ना कौ थे फेल ना इंग्लीश फेल इंग्लीश फेल 200 मार्क पे थाए 200 इंग्लीश बोल इंग्लीश फेल हाँ आउ सब पास आर्ट्स पढ़ू थाए ठीक अच्छे ना मुझे पढ़ी मुझे पढ़ पिला मैंने मना कले मुझे कहली अरे से पढ़ू पिलाटा पढ़ू कौन पढ़ू देखा कौन हो. के दिन पर कहला सर आपण पाखे मु राति शोबी मुलार ये लाइन ना करेन्ट ना भल मंद जगह जंगलटा मशाणीटा पाखे तू कहीं ये घर तर छाड़ी आस मत कहूँ गुरु पाखे न रही कौन पाठ हम मत एमती बतला मुझे अरे ठीक अच्छे एमती कथा कहूँ हाउ ठीक अच्छे मुझे हाउ कहला 2 दिन पर कहूँ सर मत ट्यूशन फी घर देवेनि
आम घरे गाई अच्छी क्षीर होउछि मम्मी कहला सार हम पे क्षीर नहीं जा और तुम दी जा पीब बोले अरे तू कहीं ना ना सार पैसा पड़ुनी आनी क्षीर राति कौन कर खाई सारा पर राति 9टा को क्षीर धरिक आसो सी गोटे बोतल पीब अधा लिटर मु पीबी अधा लिटर मो भाऊ मु 15 दिन भीतर पूरा मो चेहरा बदलीगला कहीं ठीक ठाक मुला जितेबाला नुआ नुआ चाकरी कली यंग एज पूरा से पाखरे तापरे आउ 7-8 दिन पर मत कह सार गोटे कथा कहि आप रागे मुझे अरे राति 1 बजे तू कौन मत कथा कह चमक पड़ी मुझे भूत भूत उठे लगी ये भाविली कहला खर सार गोटे कथा कहि बोले कौन कह ना कह कौन कि सार तो आम क्लास रे सेकेंड लाइन रे जो से कांथ पाखे गोटे झीटा बसनी बोले किए से मोनालिसा तो मुनि मुनि डाक बोले कौन है मुनि कौन है हाँ सार बोले कौन है कौन पे कहलु कथा कहला कह सार मुझे भल पाऊँ बोले हो यही कथाटा कहूँ मुझे पूरा भाविक रही चुपचाप एमती रही मुझे जोक कली सागर कौन कहूँ सार रागिले कि आप क्या रागि आप किसी कहूना मुझे रागिली मुझे मन मुझे निजे डरवाई कहली अरे मुझा भल पाऊँ हसिला जोरे कहला ना सार मिछ कथा आपण को गोटे भल पाए आप सार बोले सार बोली कौन मो मनीष नुह भल पाए मना यही कथा कहली जो सी सब कहले ना ना आप गोटे प्रकार पाँच ना मुझे आउ गोटे प्रकार मुझे तोर केमी आउ गोटे प्रकार ना सार मुझ स्टांडर्ड 7 रु पाइले ओह एमती कथा हसी हसी जहाँ मुझे माड़ दरकार तू एमती है एमती कथा कही दिने बदमाशियाटा साइकेल फाइकेल एमती धरिकी चकाचकी कर मोड़ा मोडी कर नब दिने कॉलेज फेरुची एमती आगे एमती गड़ेकी नहीं मुनि आई एम लविंग यू एमती कही पड़ा कहला परे तार बापा भाई समस्ते मूर्ख मते मारिया को आइले से मुनि यही घरे कहला तू मास्टर सी पढ़ाऊँ मुझे देखी अमक समक मत हस लगे मुझे अरे कौन लोग से एमती कालर धरिकी तलू डेई पड़ा बोला हाँ केस कास कौन कहला कहला कौन आस ना गुरुजी कौन एमती कहलु कौन मार कौन पे तुम किए सब एमती कथा कहला बेलू मु भी डरी डरी खाली थाए धरे थरू थाए कुकुड़ा जमी थरती कहीं मुझे जानी ना से एरिया बाड़िया बाड़ी करदे मत पीड़ापिड़ी करदे राति मुझे गोटे भावुली एमती हो कौन है आउे एमती गला बेलू तापर सी ओल्ल पड़ा कहला ते मुझे कौन कहली मुझे कहली तू कहलुनि से दिन पुणी आम लविंग कही पड़लुनि हाँ ठीक कथा कहीदे कहला सार शुणु आप मो गुरु मिछ कथा कहूनी आपको आई एम लविंग यू सारे कौन ग्रामर ठीक तो हठात बुझीपारे कौन तू कहू ना सार कहतु आई एम लविंग यू ग्रामर ठीक मुझे ना तो ठीक कौन बोले आई लव यू मुझे कौन आई लव यू कही मत कौन मार एक कथा कहला बेलू सी ता घर को बुझेदेला मूर्ख ता बापा मूर्ख भाई मूर्ख सब मूर्ख यहाँ कौन ना मिछ कथा भूल कथा कहला देखिले भूल कथा तू कहू ओल्टा से गाड़ी कले ये काल धरिक मोर रहा से मत कहले गुरुजी भूल होमर कहीकि बापा भाई गले मो मुंड खराब तू बोले केड़े ब्रेनी तू चला ना आप सारे पढ़े क्लास रे यही वार्ड गुड़िक प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगभग कौन आई लव माय पेरेंट्स मुझे मुझे कहली आई एम लविंग एटा भूल ना ठीक ठीक ना भूलटा तेणु कहली असुविधा कौन है सेठू मु सरेंडर कली भगवान इटा एड़े चालाक अच्छी हो जा हो से जगह पाठटा को इम्प्लीमेंट पाठ पढ़ला बेले बेले कथाटा मन पड़ जाए तापर से पढ़ला जो मोबाइल युग नथिला फोन नथिला किछि नथिला मु पळै आइली तापर से पिलाटी 72 मार्क्स रखिकरी तापर +2 पास कल मिलिटारी रे चाकरी करछि कोन जो आपनकर कोटा सीआरपीएफ रे चाकरी करछि एवं से मुनि की से मैरिज कला बुझ पारल तो जाओ पछरे गली देखा हलु कथा हलु बहुत बढ़िया लागिला किंतु ए होछि कथा एई भर बुडी को मन रखिथिबे ए बेबी ए मन ए भर बुडी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे यूज करिबे अछि जदो एग्जाम रे पढिबो आमे ताकू कोन करिबा प्रेजेंट सिंपल ले सब तक यूज करिबा ओके ठीक अछि अच्छा तापरे आमे आज नेक्स्ट पार्ट को जिबा तुम टिके बोर फील कर टिके मु कहली आ गोटे छोट पार्ट अछि से पार्टटा होछि कोन ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस बा प्रोग्रेसिव तार एते पॉइंट नै 6टा पॉइंट गोटे का यूज करबा ओके ठीक अछि जते बेले आमे टेंस टा को पूरा कंप्लीट कर दबा पूरा टेंस को हम कंप्लीट कर दबा यू विल बी द मास्टर गारंटेड तमे निश्चित भाव रे समस्त टोटली समस्ते तेणु समस्ते यूज करबो जते बेले तार टोटली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्लियर हो गला परे
तमें निजे एबुल हो मो रिपोर्टेड स्पीच केमती करबी एक्टिव पैसिव केमती करबी टिप्स कला सब धरिबो ठीक है पेशेंस रख आज ठीक है देख छोट पार्ट को नेबी तापर ग्रेजुअली धीरे 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 हम ताकर यार कॉपी मध्य पीडीएफ रे सार को कहबी सब लोड करी तुम पठाबो पीपीटी करदबा तते अछि एवं आउ कि दिन परे तुम गोटे प्रिंटेड मटेरियल सब मध्य पाइबो ओके ठीक अछि कंटिन्यूस करी नेक्स्ट पेज को जिमे ओके तो तेणु आमे लिखिबा वर्तमान द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जोटा को आमे कहूचे पिला माने प्रोग्रेसिव टा को आमे कहूचे कोन बा कंटीन्यूअस मोइठी लिखि दोचे जो माने डाउट करूच प्रेजेंट कोन एटा कंटीन्यूअस एटा दीटा के एका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ओके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जोटा को आमे को प्रोग्रेसिव और कंटीन्यूअस दीटा को बटन जोटा प्रोग्रेसिव सेटा भी होचे हमरा कंटीन्यूअस ओके तो तेणु आमे देखंतु केमते एटा हिची प्रोग्रेस कंपटीशन रे तार मु गोटे स्ट्रक्चर एट लिखि दोचे स्ट्रक्चर टाको एठी मु कर दोची कोन ना सब्जेक्ट प्लस am is are प्लस v1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट देखंतु केते सुंदर कथाटी अछि ओके देखिबा हियर सब्जेक्ट I stands for I मु is third person singular number are for the plural we you third person plural समस्त संगे are तापर असला हमर v1 ing देन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जहां हमर सेंटेंस भीतर थिबो ठीक अछि तो यार यूजेस भीतरो हमें वन टे लिखिबा कोन लिखिबा ना it is used to describe an action which is going on now which is going on now वर्तमान समय रे जो कामटा कंटिन्यू करूची से कामटा को हमें कहबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव which work is now in progress that is called continuous work से continuous work को वर्तमान मु आपन को जणाइबी ओके कोन हबो ना आई रे थिले आम लगेबी इज थिले आईएनजी लागिबो आर थिले भी आईएनजी आपन लागिबो फॉर एग्जांपल मु लिखुची आई एम स्पीकिंग नाउ नाउ इंडिकेट कला वर्तमान समय को आम स्पीकिंग हे लाइटा ही इज रीडिंग नाउ में लगला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज रीडिंग कर देले आमे लिखिबा दे आर लिसनिंग टू मी एट प्रेजेंट देखंतु एटा केते हला दे आर लिसनिंग टू तुम माने मते सुनुच मैं कहबी दे आर लिसनिंग टू मी एट प्रेजेंट वर्तमान करूछ ए कोंती प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्शन व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ जोटा कि वर्तमान चालू अछि जो कामटा एटा कंटीन्यूअस मींस प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस दैट इज कंटीन्यूअस एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम ओके देन आमे जिबा सेकंड पॉइंट रे कोन करिबा लिखिबा जो सेकंड पॉइंट लिखिबा इट इज यूज्ड विथ ऑलवेज रेगुलरली continuously etc etc to express बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने एटा टू एक्सप्रेस persistent action of the present time which is obstinate पिला माने obstinate एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मु एइने कहितली ऑलवेज रेगुलरली कंटीन्यूअसली ए सब हैबिचुअल एक्शन ने बसिबो वर्तमान कहूचे आ गोटे एठी ऑलवेज रेगुलरली कंटीन्यूअसली एटसेट्रा बसिबो कोठी प्रेजेंट कंटीन्यूअसली को जगह रे ना जो जगह रे persistent action to express how करिबो ना persistent action of the present which is obstinate प्रेजेंट टाइम रे जो कामटा कंटीन्यूअसली चालुची किंतु खराब काम
खराब काम कौन खराब काम which causes anger irritation annoyance in our mind भलो काम ऑलवेज करी रेगुलरली करी खराब काम हेले प्रेजेंट कंटिन्यूअस करी सेटा हबो सिंपल प्रेजेंट एटा हबो प्रेजेंट कंटिन्यूअस केमिति मन करंतु फॉर एग्जांपल आमे लिखिले स्मृति आमे लिखुचे आमे तेणु आमे कौन करिया नेगेटिव वर्क स्मृति सब बेले स्कूल को ठीक समय आसे स्मृति सब बेले ठीक समय स्कूल को आसे स्मृति ऑलवेज कम्स टू क्लास इन टाइम स्मृति ऑलवेज कम्स टू क्लास इन टाइम तेणु आम ऑलवेज लगे जो मुझे कहबी स्मृति सब बेले क्लास पछपटे सिगारेट टाणुची कौन करिया सेटा खराब काम इडियट वर्क तेणु ये कहबी स्मृति ऑलवेज कम्स टू क्लास इन टाइम हैबिचुअल एक्शन खराब एक्शन हेले स्मृति इज ऑलवेज स्मोकिंग बिहाइंड द क्लास एवं जो एडवर्ब इट कम्स आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी किए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे आमे लिखिबा एठी स्मृति ओके TRU स्मृति सॉरी एट लिखि दउची मु लिखि दउची ए छाडी दउची एक्शन एटे आ गोटे एक्शन कर दउची एग्जांपल ता तळ गोटे हेउची ऊपर लिखि दउची टिके ये देखो अच्छा एट लिखिबा देखो हला स्मृति इज ऑलवेज स्मोकिंग बिहाइंड द क्लास देखो एटी इज ऑलवेज स्मोकिंग वर्ब मझे रहला मिड पोजीशन रे ऑलवेज काहे कि एटा खराब काम एटा जेहेतु खराब काम आमे इज ऑलवेज कौन कर दिले स्मोकिंग यदि भलो ही थांता स्मृति ऑलवेज कम्स टू क्लास इन टाइम गुड वर्क किंतु जदि खराब काम हेची एंटी एटी खराब काम हेची तेनु हम करिया स्मृति इज ऑलवेज स्मोकिंग बिहाइंड द क्लास स्मोकिंग बिहाइंड द क्लास हम लिखबी प्रगति is regularly quarreling with her friends पहला माने एटा खराब काम is regularly quarreling okay is regularly quarreling okay don't mind at all किए जदि आमर स्मृति अछि आमर किए प्रगति अछि नेवर माइंड इट कारण मु का पर्टिकुलर एग्जांपल करूनी रे ना टेम लिखिली कोन पे ना ए इज ऑलवेज स्मोकिंग इज रेगुलरली क्वारलिंग एटा होची प्रेजेंट कंटीन्यूअस एवं द ऑलवेज रेगुलरली ये सब बसबो आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी दे ऑक्युपाई द मिड पोजीशन इन द verb which verb present continuous verb because it is negative action okay then another point को आमे जिबा ओके तो another point को आमे जिबा कोन लिखिबा थर्ड पॉइंट को जिबा लिखिबा नंबर 3 लिखिबा it expresses temporary action अरे temporary action कोन which action is going on but not at present that is temporary मु बीजेबी कॉलेज रे पढुछ वर्तमान मु ऑनलाइन क्लास रे अछि मु नुआ दिल्ली रे रहउछ वर्तमान तमे भुवनेश्वर रे अछि ए जो एक्शन उड को चलची that is regular action but these actions are not happening at present that is called temporary action okay example right I am reading in a university मु गोटे यूनिवर्सिटी रे पढुची किंतु not at present I am at home I am taking the online class understand this is called temporary action
When you are taking the class here at your home, somebody comes and asks you, "Are hey, hello, what are you doing? Which college are you in? Which study are you doing?" So I am reading in a university, but now you are at present at your home. Understand? This is called temporary action of the present time. Okay, okay. Then come to another point. You see, number 4. ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କଲେ ସିମ୍ପଲ କୁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ୟୁଜ करथिले ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା ओके सो फ्यूचर ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବା କଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଆ ଯାଇ ନଥିବ ଲେଖିଛି ଏଠି ମୁଁ एग्जांपल इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a near future action for which the time is not fixed जहाँ पे टाइम फिक्स्ड है ओके सेठी हम नियर फ्यूचर पे कोन करिया आसंता काली हमें जगन्नाथ टेम्पल देखिया को आसीबा हमें लिखि परबा एग्जांपल ले हम एग्जांपल लिखि परबा टी वी आर विजिटिंग द जगन्नाथ टेम्पल टुमारो पिला माने टुमारो इंडिकेट करछि फ्यूचर किंतु वी आर विजिटिंग काहे कले टुमारो मींस सकाळ 6 रु संध्या 6 पर्यंत जेतेबेले हेले आमे जेबा टाइम इज नॉट फिक्स्ड टुमारो माने टुमारो तो व्हाट टाइम इज नॉट पर्टिकुलर तेणु से केस रे आमे कोन करूछे एठी किंतु यदि टाइम दे थांता at 10 am at 8 am ताले में सिंपल प्रेजेंट करथांते या पूर्व थरो जिन पॉइंट रे कहली सिंपल प्रेजेंट रे यूजर में कहली कोन करथांते आमे सिंपल प्रेजेंट करथां किंतु एठी कोन हिची जे जेहेतु आमे एठी यूज करिचे जे टाइम किछि नाही तेणु आमे एटा को कोन करिवा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे फ्यूचर हम ये गोटे पॉइंट ओके मन रखिथांतु एमति गोटे पॉइंट एग्जांपल आ गोटे हम लिखि दे परिबी आई एम गोइंग टू माय uncle's house next week रे मु अंकल घर को जीबी तो आई एम गोइंग टू माय uncle's house किंतु को दिन जीबी जाननी किंतु नेक्स्ट वीक रे जीबी तेनु टाइम फिक्स नुहे ए जगह आमे ता कहया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा कंटीन्यूअस रे फ्यूचर एक्शन को डिस्क्राइब करबा ओके बस तापरे हमें जीबा पिला माने नेक्स्ट को हमें जीबा 5 नंबर को जीबा यूजेस 5 कौन लिखिबा यूजेस 5 रे लिखिबा लेखो मु कहिबी इट इज आल्सो यूज्ड ठीक है लिखि दोची इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन फॉर व्हिच अरेंजमेंट or preparation is already finished देखम तो गोटे कथा जहाँ पे अरेंजमेंट बा प्रिपरेशन सरी जाइछि फ्यूचर रे करिबा पई से अरेंजमेंट एक्शन टा फ्यूचर रो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे हबो कोन हबो मु तले प्रैक्टिस करबी तले आउ थरे गोटे डिस्कशन करबी मु खाली रूल तक वर्तमान कहूछ रूल टा जानला पर मु इजी हो टू डिस्क्राइब पर जिंस ओके तो सेठी में मु गोटे जिंस करूछ एठी कोन करबा कोन नै मत देखाउछ ए जिंसटा को आमे करला को मु गोटे कहबी अरेंजमेंट सरछि धरंत गोटे कथा आमे गोटे संडे दिन गोटे पिकनिक करिया तापे वर्तमान पैसा पत्र आदाय कर दैछे जिंस पत्र किनि दैछे बस भी आमे गोटे हायर कर देइछे बॉयज को हायर कर देइछे वर्तमान गोटे एडवांस कर देइछे करिया पय हमें नेक्स्ट गोटे पिकनिक करबा तने हमें करि देइछु प्रिपरेशन हमें संडे रे करिवु कि नेक्स्ट वीक रे करिवु पिकनिक फ्यूचर पय बिफोर हैंड प्रिपरेशन रेडी तो हमें एठी करि परिबा एग्जांपल टे रे हमें लिखि परिबा एठी
we have collected money and made everything ready. देखो, we have collected money and have made everything ready. We are making a picnic. Next, देखो, we are making कहली कौन कहली we are making कौन पे we are making कहली ना आमे ऑलरेडी तैयारी कर देछु पैसा आदे करछु प्रिपरेशन सरीची आमे पिकनिक करिबू अर्थ फ्यूचर किंतु एट लागिला आर मेकिंग एटा फ्यूचर मीन कला आर मेकिंग फ्यूचर मीन कला आमे वर्तमान परीक्षा पे प्रिपेयर करछु तमरो सिलेबस पिला मन सरी गला आसंता डिसेंबर मास रे परीक्षा हबो परीक्षा देबे आमे लिखि दे परिबा आमे एक एग्जांपल करिबा दे हैव finished the syllabus. They are appearing the exam next month. धरंतु तेणु आमे कहले आर appearing से माने परीक्षा देबे कारण प्रिपरेशन करि दैछंती दे हैव फिनिश्ड आगो फिनिश्ड हे जाईची आमे तापरे प्रिपरेशन कर दैछंती तेणु एटा को आमे कोन करू ना फ्यूचर निकट भविष्यत रे जो कामटा करिया को जिबा तापे प्रिपरेशन जो अरेंजमेंट सरी जाईथिबो ताहले आमे ताको फ्यूचर पई प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे करे ई गोटे प्रकार फ्यूचर ओके ये गला आपनकर 5 नंबर देन कम टू 6 नंबर पॉइंट को जिबा 6 नंबर पॉइंट लिखिबा it is used in the form of बहुत important पिला माने एटा it is used in the form of am is are plus going to plus v1 for going to in the form of am is are going to plus v1 to express near future action with intention. Understand? ठीक है सुनंतु बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नियर फ्यूचर पई आमे आमी जार लिखिबा भी गोइंग टू प्लस गन आई पे आम थर्ड पर्सन सिंगुलर पे इज प्लूरल पे आर प्लस गोइंग टू प्लस v1 to express that means what with intention means it is colorful future जो फ्यूचर रे किछि इंटेंशन अछि किछि आइडिया अछि किछि लर्निंग अछि तो सेटा कहंती कलरफुल फ्यूचर से कलरफुल फ्यूचर टाको एक्सप्रेशन करिया पाई आमे बी गोइंग टू प्लस v1 बा आम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस v1 मेथड रे फ्यूचर को लिखि कोन एग्जांपल परंतु भुवनेश्वर रे गोटे भलो सिनेमा पड़ी महाराजा हॉल रे पड़ी आम देखा जा कौन पे ना किसी शिखा किसी एथिकल जिनस अच्छी जाना सपोज माइथोलॉजिकल जिनस थे जाना कि टाइम पास करवा जेकोसी कथा गोटे कलरफुल फ्यूचर से जगार आम नियर फ्यूचर के आज संध्या आज इवनिंग शो देखा गला बेले सेठी आम विल साल लगे करवा तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग तेणु कौन लगे एग्जांपल लिखा वी आर कहीं वी पे अप्रोप्रिएट किए आर वी आर गोइंग टू विजिट द सिनेमा टू नाइट आम देखा आज रात वी आर गोइंग टू विजिट देखंतु आर गोइंग टू विजिट वी शाल विजिट वी विल विजिट रॉन्ग हम
मु गोटे स्कूटी किनिबी ईवी स्कूटी तेल बढ़ी आनी दर आई एम गोइंग टू बाय an EV scooter next week देखंतु एठी आई एम गोइंग टू बाय बुझिपारे आई एम गोइंग टू बाय आई एम गोइंग टू बाय EV scooter next week तेणु इट इज फ्यूचर इंडिकेशन विथ इंटेंशन इंटेंशन अच्छी तेणु आम इंटेंशन को देखिए करुचे बुझिपार तेणु बी गोइंग टू फॉर्म करवा तापर आउ गोटे फॉर्म अच्छी तार आउ कौन करवा जितेबाला आम नंबर 7 को जावा आउ कौन करवा जितेबाला आमर प्रेडिक्शन टिके अच्छी इट इज यूज्ड विथ का सहित यूज हम विथ प्रेडिक्टेड विथ प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर prediction for future or the action is more expected the action is more expected the action is more expected in future देख एई थरे आमे कौन करि पारू लगे एक्शन टा मोर प्रेडिक्शन एक्शन ता होची मोर प्रेडिक्शन दैट इज मोर प्रेडिक्शन एवं एठी कंप्लीट कर देला परे आमे देखिचे तो प्रेडिक्शन हबो फॉर फ्यूचर एक्शन इज मोर प्रेडिक्टेड एंड और प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर कौन करी मु कहबी अरे कृष्णा छता निक जा जोर जोर बिजुली मारुची वर्षा हबो जा 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 छता निक जा काहेकि मु एक्सपेक्ट कली कृष्णा तमे टिके नेक जा छता वर्षा बिजुली मारुची घड़घड़ी मारुची लाइटनिंग होची वर्षा होधा तेणु मु एठी एग्जांपल दे पारिबी आमे कहबी इट इज lightning with thunder it is going to rain soon देखंतु एठी going to rain soon जोटा होची वर्षा बिजुली मारुची घड़घड़ी होची एक्सपेक्टेशन ता अछि वर्षा हपेन जो तेणु आमे कोन करूचे आ कहचे एठी ओ नहीं जा छता नहीं जा न रेनकोट पिंधि जा कने इट इज गोइंग टू रेन इट इज लाइट वर्षा होची जोरटा होची गोटे पिलाटे दौड़ीची मु कहबी होल्ड द चाइल्ड पिलाटा को धर पिलाटा को धर पड़ी जीव इट इज गोइंग टू फॉल देखंतु इज गोइंग टू फॉल ये होची तमरो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ओवर आज मु आउ गोटे अल्प समय क्लास नेबी केवल प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट कर देबे आपरे आमे आउ बाकी तक रेस्ट पछर पढ़िबा ओके तेणु एछि किछि असुविधा हबो नाही ओके आमे देखिबा तापरे कोन कर जिबा हम तो करबा टिके गोटा 5-10 मिनिट टिके अपेक्षा कर आ गोटे लास्ट क्लास गोटे पॉइंट कर देबे ब्रीफ पॉइंट तापरे ओवर हे ओके ठीक अछि कम टू द पॉइंट आमे लिखिबा द प्रेजेंट perfect tense okay very soon it will be completed गोटे कथा पिला मन देखो एठी लिखिबी मु तार स्ट्रक्चर टी सब्जेक्ट प्लस have स्लैश has प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट देखंतु ए जो टॉपिक हमें दाउचे देखो have फर्स्ट पर्सन आई वी सेकंड पर्सन यू तापर v3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर has और किछ नै ओके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओके तापरे आउ किछ नै तिकी परे हमें दबा गोटे यूज कर देबी देखिबा टिके पिला माने किमती यूजेस होछ यूजेस 1 ए गोटे कंप्लीट कर दियो तापर आ नेक्स्ट क्लास करबा किछ ओरिड होबनी ଏବଂ तार टिप्स मु कहि देबी किमती आलोचना होछ डिस्कशन क्वेश्चन सब कर देबी ओके ठीक अछि देखो पुनी कोन करबी लेख एटी गोटे लेख इट इज यूज्ड to express
an action, express an action began in the past and is still going on, is still going on up to the time of speaking. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ ଅତୀତର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ କି ପଢେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 5 ମାସ ହେଲା କି 6 ମାସ ହେଲା ପଢିଲେଣି, 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ପଢିଲେଣି ଯେ ଆଜି ପଢୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? 5 ମାସ ତଳୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଓକେ, এটা ঠিক না ভুল ଅଛି? ତେଣୁ ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ ଲଗାଇବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଏଠି, we have studied online for 6 months। ଦେଖନ୍ତୁ we have studied, present perfect, he has taught us for 6 months, means 6 ମାସ ହେଲା ପଢେଇଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ସେ 6 ମାସ ହେଲା ପଢଉଛନ୍ତି। 5 ମାସ ହେଲା 6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛୁ ଯେ ଅନଲାଇନ ଏବେ ବି ପଢୁଛୁ, that is called present perfect, that is called present perfect। ଆଉ ଏଠି adverb ଆମର ଲାଗିଲା for 6 months, ଏଠି for 6 months ଆମେ ଏଠି ଲେଖି ପାରୁଛେ, started before and is now going on। କିନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ କହିନି, ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 5 ମାସ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 6 ମାସ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ଇଟ୍ ଇଜ used with just to express what? Immediate past action। जो घटनाटा हठात किन सरीगला ताको कहबा हम इमीडिएट पास्ट एक्शन। इन दिस केस रे कोन हबो, हियर just occupies the mid position in the verb। देखो पिला माने मिड पोजिशन अर्थ प्रेजेंट परफेक्ट रे जोड़े वर्ब have has प्लस v3, have or has प्लस v3, have or has मझिरे जस्ट बसियो तापर v3 टा लिखा, v3 टा लिखा। एग्जांपल मोटे दउछ देखो, द current has just gone out। देखंतु has just gone out रे just रहला मझिरे, दीपट रहला प्रेजेंट परफेक्ट, फर्स्ट ऑक्सिलरी पर सिबा। एग्जांपल कर देबी, we have just finished lunch। आमे जस्ट लंच खाइलु, आमे जस्ट ओवर कलु, कर देलु पर देखाउ खाद्य। have just रहला कोठी आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी मिड पोजीशन। ओके, ये गोटे पॉइंट पे हमें। ओके, तापरे आ गोटे पॉइंट को जिबा, नंबर 3 के जिबा। वेरी सून इट विल बी कंप्लीट दिस वन एंड हैव पेशेंस फॉर 2-3 मिनिट्स ओनली। 3 मिनिट 2 मिनिट रुहंतु, देखि दबा। नंबर 3 लिखि दबा, व्हेन वी गोटे जिंस मन रखो, व्हेन वी पुट emphasis on the result of a previous action, when we put emphasis on the result of a previous action, the verb becomes a present perfect। the verb becomes a present perfect means जेतेबेले आमे गोटे प्रीवियस एक्शन नो रिजल्ट को इंपोर्टेंस दबा, गुरुत्व दबा, एम्फसाइज करबा, सेतेबेले प्रीवियस एक्शन टा पास्ट परफेक्ट रहबो। कोन एग्जांपल गोटे धरंतु आमे गोटे क्लास मु करूची, आमे 20 जण पिलाटी बसचंती, क्लास के पिलां गोटे असाइनमेंट कली, पिला माने टिके असाइनमेंट एटा कर देलो, मु टिके वॉशरूम रो आसुची, एती कहला बेलको मु वॉशरूम रो आसली 5 मिनिट पर बेलको पिला कोन करछंती, से पाठ सारी तांग भीतर गप चलै छंती। मु आसिक देखिली, अरे हे व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गॉसिपिंग हियर, सर वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। ओ
माने जेतेबेले काम सरी जाइछि तापर गपिचंदी मु कोन देखिली गप देखिली गपटा कहा रिजल्ट काम सरीबार रिजल्ट अंडरस्टैंड बुझी पाले कि नहीं गपटा होची काम सरीबार रिजल्ट तेणु मु देली एम्फोसिस का ऊपर गप ऊपर कारण ता गुरु से साथ दिछन तेणु ता सारीबा कामटा होची प्रेजेंट परफेक्ट they are gossiping now because they have finished their assignment example कर दोचे बुझी पिला माने they are gossiping now because they have finished their assignment देखो have finished their assignment कारण they are gossiping बता करछथि ये गोटे चलला पिला माने एठी गोटे अछि ओके तापरे आ गोटे पॉइंट होछ नेक्स्ट तापर पॉइंटटा जेमिति मु सिंपल प्रेजेंट रे कहिथिली मेन क्लॉज रो वर्ब ता फ्यूचर थिले सबऑर्डिनेट पार्ट ता फ्यूचर बदले रे प्रेजेंट सिंपल हबो जेतेबेले टिल अनटिल as soon as when after को नेक आरंभ हितबो ठीक सेमती एटा भी एग्जैक्ट पॉइंट when the verb of the main clause refers to future action the verb of the subordinate clause becomes a present perfect if it starts with till until as soon as when before after etc अर्थात तमे दुई प्रकार कर परिबो either simple present कर परिबो और present perfect कर परिबो एट तम इच्छा ओके सेते मु एटा को तुमको कहूची मन करन एठी we shall दिमते लिखितले leave the class हाँ till the teacher has allowed us has allowed present perfect eta future till the allowed us the teacher has allowed आम करि पारे allows us or has allowed both the points are there nothing else it is okay it's clear okay our last one bit टिके लिखिबा गोटे मिनिट there are गोटे मिनिट only गोटे मिनिट टिके पेशेंस रखंतु गोटे मिनिट टिके लिखि दी गोटे पॉइंट लास्ट पॉइंट इट इज लिखिबा so when sorry there are certain verbs there are certain adverbs which are always used with present perfect tense such as already lately recently still yet not yet now that never ever or today this year okay these are the things and ei jodi point गुडी adverb गुडी थिबो जानिमो ए गुडी प्रेजेंट परफेक्ट रे यूज करा जिवो फॉर एग्जांपल मु लिखिबेठी एग्जांपल आमे लिखिबा फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ गोल्ड has recently gone up देखंतु has recently gone up present perfect the teacher has not come to class yet it is also present perfect and these are also have you ever seen
द Tajmahal. Okay, these are what called present perfect tense. Okay, this is over. आमे next class रू आमे present progressive रू perfect present perfect progressive start करिबा, continue करिबा, doubt clear करिबा, मो examples देबी, anything and comment रे तमे एको use करिबा, मु तापर केमिति as usual normally we can achieve the success तो सेबे मु तार व्यवस्था करिबे. Okay, and it's a very good taking class for you today. Have a nice day. Thank you. Bye. सर आ टिके खाली पिला टिके कथा हे जिवा ठीक अछि. आपण सिना सर सैटिस्फाई कले पिला निहाती कमेंट जणैबो आजी तो सार क्लास केमती लागिला एटा निहाती कारण फर्स्ट टाइम पे होची गोटे ऑनलाइन क्लास सारा आगु ऑफलाइन रे बहुत सारा बहुत पिला को मोटिवेट कर सालेनी आगु बढ़ई सालेनी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे एटा होची फास्ट कथा आउ तमन को जदी भलो लागिची क्लास तले निहाती कमेंट बॉक्स रे सार को गोटे केमती करबो माने ऑनेस्ट फीडबैक दबो सार क्लास केमती लागिला आउ सार सहित कंटिन्यू करबा कि नाही आउ गोटे दिन आउ गोटे इनफॉरमेशन कौन कि वीकली जो क्लास रोला ता भीतर सार को निहाती रिक्वेस्ट करी कि गोटे दिन एमती गोटे माराथन क्लास रखिए जमीती कि खाली क्वेश्चन ये तो आम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट चली थियोरेटिकल जमीती आज यूजुअल चलता जहाँ पर जहाँ अच्छी से जिन गुड़ाक सार पढ़े चलिए सहित वीकली एमती गोटे क्लास रखा मिनिमम 3-4 आवर जोटा खाली केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कसन केवल कारण आम बहुत सारा पिला सारा एक्चुअली कौन कि बड़ पिला हो गले ना मैंने ऑलरेडी टिके जानते जिन गुड़ाक तो से डायरेक्ट गोटे क्लास एमती रखा जोटा खाली क्वेश्चन आंसर डिस्कसन भी रखा आउ ठीक अच्छे समस्त को एतिक रिक्वेस्ट निजर ऑनेस्ट फीडबैक ए क्लास रो एंड परे कमेंट बॉक्स रे दबो सार मते कहिथिले कि जदी भलो कमेंट आसिला ताहाले मु कंटिन्यू करबी तो केमिति लागिला निहाती कमेंट बॉक्स रे जणैबे रहिलु नमस्कार थैंक यू Okay, thank you all. Thank you.